So good evening once again. My name is Subilal. I am a business automation coach. I started my career with Indian Navy. पहला 15 साल मैं Indian Navy में था and I retired from Indian Navy in 2017. And after that, I got into entrepreneurship. So these days, I do teach business automation, digital marketing, and we have a company called Business Studio in Kerala. So we do business automation services, and predominantly we focus more on sales automation process for the businesses. And we do give all sort of support as well as platform to implement business automation. And unlike others, we have an integrated platform, which means that the capital which we have invested in the company to develop the platform is comparatively less to the development companies, tech companies. So we are able to provide the services at the affordable cost of the Indian market. So let me start the session with all of your permission. I'm taking your permission to start this session. So once again, I welcome all of you. So today's session is on business automation. You can see in the screen that the future of businesses. I have mentioned the business automation as the future of businesses. Why? Because these days, most of the companies are automating their business processes. And you know, there are many processes in the business. Why this automation is happening? What is the benefit of it? And what will happen if you do not automate the processes in your business? We will discuss about it. And in the time of this pandemic, all those companies which have implemented automation in their business have sustained, and those who could not automate their processes, most of them have wound up in that time. And जिनके automations चल रहे, जिन्होंने automation implement किया है, उनका business अभी भी चल रहा है, they are still progressing. And जिनके पास automation नहीं था, जो purely human resources पे dependent थे, उनमें से काफी सारे बंद हो चुका है. और आने वाला फ्यूचर में बिना ऑटोमेशन का आगे जाना बहुत मुश्किल पड़ेगा. तो अगर आप लोग बिजनेस करते हो, ये सेशन आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा. सो ट्राई टू फोकस इन दिस सेशन एंड let me know your questions and questions after the session. So I'll try to answer your questions. So let me start again. Once again, my name is Subilal. I am the CEO of Business Studio, and we are from Kerala. We are operating from Kerala, right? So हम तो देखते हैं, स्पेशली इंडिया में तो बहुत सारे लोग, people study, the parents pressurize their children to learn, to study well and get into the बीटेक ले लो या एमबीबीएस ले लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ. We have a mindset of developing the people into the employment, but unfortunately the thing is not like that. The entrepreneurship is one of the toughest but also the most rewarding career option in a lifetime. मतलब अगर आप दुनिया में देखेंगे, जितने लोग फेमस हुए, जितने लोग सक्सेस हुए और जिनको हम सक्सेस आइकन माने जाते हैं, वो सारे एंटरप्रेन्योर्स है. When I say सारे, almost 99% of them are entrepreneurs. So that is the most rewarding career option in someone's lifetime. But what happens in our country is that we push our children to become an employee in some way or other. And no need to say that entrepreneurship journey is the one of the toughest journey which we can have in our life. जो भी बिजनेस करते हैं, जिन्होंने, उनसे पूछेंगे तो पता चलेगा, द मोमेंट दे स्टार्टेड देयर बिजनेस, उसके बाद जब तक वो सक्सेस नहीं हुए, तब तक उनका द लाइफ, द वर्क दे हैड टू पुट इनटू, द एफर्ट्स दे हैड टू पुट इनटू, द मनी दे हैड टू पुट इनटू, द प्रेशर दे हैव अंडरगॉन, जो स्ट्रेस थे, एंड दोस वर द टफेस्ट टाइम इन हिज लाइफ टाइम. But the reward, the result of that struggle is always beautiful. हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि हर कोई सक्सेस नहीं होता है. Some people fail, but it's okay. Still, if अगर वो सक्सेस हुआ होता तो बहुत कुछ, मतलब काफी अच्छे से वो सक्सेस होता. Not like other employees. So I congratulate everyone who are into entrepreneurship, that you have taken the best decision in your life to become an entrepreneur. And I wish you all the very success. And let us see how the journey goes in. So an entrepreneur keeps working around the clock. मतलब उनका कोई सैटरडे संडे नहीं होता है. जैसे आज के दिन संडे है और आप लोग यहाँ पे आए हो, तो हमें उसी से पता चलता है. We work around the clock. We keep learning. We keep working. We keep researching.
हम जो भी चीज करना होता है एक बिजनेस पे वो सब हम ही करते हैं, और हम शुरू से लेके हमें हमें उसी से मतलब आदत पड़ जाती है, मतलब काम करने की आदत पड़ती है, और हमें ये भी पता चलता है कि अगर हम काम नहीं करते, द मोमेंट वी स्टॉप वर्किंग इन आवर बिजनेस विल स्टॉप. So some people call it self-employment, but it's not the case. Every entrepreneur is like that. They keep working round the clock, right? So and business पे क्या क्या होता है हमें सब पे पता है. Some there are lot of processes happening in a business. Sales होना चाहिए, marketing होना चाहिए, finance होता है, networking करना पड़ता है, product manufacturing करना पड़ता है, administration होता है, HR activities होती है. तो इतने सारे एक्टिविटीज आप हर बिजनेस में होता है. एंड एन एंटरप्रेन्योर गोज इनटू एवरी एक्टिविटी, मतलब एक के बाद एक, तो वैसे ही चलता रहता है उसका दिन. एंड most of us are really confused and too pressurized to do all these things alone. शुरू में हमें सब कुछ करना पड़ता है. So इसके बाद some people, most of us end up really frustrated in some point of the time, but to be frank, ये frustration हर एंटरप्रेन्योर को होता है. दैट इज ओके, दैट हैपेंस. उससे कोई बुरा नहीं है. इट हैज टू हैपन बिकॉज वी हैव टेकन दैट दैट ऑसम मोस्ट रिवार्डिंग पाथ. सो फ्रस्ट्रेशन तो होना ही है, बट स्टिल इफ यू थिंक if you can automate lot of things in the business, this frustration can be taken down or can be reduced. Okay, but कुछ लोग फेल भी हो जाते हैं. इतने सारे काम अकेला करना पड़ता है. कभी कभी मतलब कभी सेल्स अपने हाथ से निकल जाता है, कभी प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो पाता, कभी फिनेंस तो बिल्कुल हम मैनेज नहीं कर पाते. दे एंड अप लूजिंग देयर बिजनेस समटाइम्स. बट if you really stick into it and if you really give your best results, best effort, the things will happen, though you may feel frustrated at some point of the time, right? So उनको क्या चाहिए था वैसे, मतलब वो फ्रस्ट्रेट तो होते ही है, बट ऑल ही वांटेड वाज टू रन एवरीथिंग टुगेदर ऑटोमेटेड. हम बिजनेस करते हैं सब कुछ ऑटोमेटिक होने के लिए, और हमें आखिर में हमें चाहिए होता है फ्रीडम. वी वांटेड फ्रीडम इन आवर लाइफ, फिनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम. हमें अपने फैमिली के साथ टाइम गुजारना होता है, मतलब दुनिया घूमने जाना होता है. उसके लिए भी फिनेंशियल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, और हमारे बिना भी हमारे बिजनेस चलना चाहिए. दैट इज द एंड गोल ऑफ एवरी एंटरप्रेन्योर. जो नौकरी करना चाहते हैं उनको वो सब नहीं हो पाता. दे कीप वर्किंग देयर till the end of their lifetime. But entrepreneur can enjoy the freedom if his business is automated. So the ultimate dream of every business owner, every entrepreneur is automation, automating his business processes. So let us consider a business as a car. Okay, एक बिजनेस को हम एक कार की तरह लेते हैं. एंड लेट अस सी एक कार आगे बढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए होता है. एक तो सबसे मेन है, एक कार आगे बढ़ने के लिए उनको वो टायर्स की जरूरत, व्हील्स की जरूरत है. और एक बिजनेस में अगर हम देखा जाए, देयर आर मेनी प्रोसेसेस लाइक द प्रोडक्शन टू सेल्स. देयर आर मेनी डिफरेंट प्रोसेसेस, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, ट्रेनिंग, एचआर. वैसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं बिजनेस में. एंड जब ये सब साथ में घूमता है तभी बिजनेस आगे बढ़ पाता है. कोई भी अगर टायर इसमें से नहीं घुमा तो वो गाड़ी वहीं रुक जाएगी. Okay, so let us consider the processes as different wheels of a car, and let us consider the business as a car. And हमारा काम क्या होता है? The business person drives the car. The founder or entrepreneur, उनका ड्यूटी यह है कि वो कार को चलाना. We are driving the car. Okay, most of the time we see that हम जाके हर टायर को हमें हाथ से घुमाना पड़ता है, सेल्स को हमें हाथ से घुमाना पड़ता है, प्रोडक्शन को हमें हाथ से घुमाना पड़ता है. लेकिन हमारा एक्चुअल काम वो नहीं है. हमारा काम यह है वो गाड़ी को सही सलामत सही डायरेक्शन पे ड्राइव करना, गाइड करना, आगे बढ़ाना. ये होता है एक एंटरप्रेन्योर का मेन काम. और वो वहीं पे फोकस करना चाहिए. उनका काम हर टायर घुमाना नहीं होता है. उनका काम गाड़ी को आगे द राइट डायरेक्शन पे लेके जाना उनका काम होता है. एंड ये भी आपको पता है, टिल बी रेज ह्यूज इन्वेस्टमेंट एंड we implemented a very experienced management team for the business. We are the person who is going to run the show. हमें until unless like unicorn companies होते हैं, वहां पे क्या होता है कि the angel investors or VCs comes in and they invest lot of money in that business and they employ the most intelligent or skilled people
to run the business, and उस time पे we can take leave from that our involvement, our daily involvement, then we can relax a bit. But till then, we are the person who is supposed to drive the car, drive the business to take it forward. Okay. So to take a car forward, if you want your business to move forward, हर व्हील एक साथ घूमना चाहिए, एक ही स्पीड पे घूमना चाहिए, और जितना तेज चल सकता है उतना तेजी से वो टायर्स घूम के वो गाड़ी आगे बढ़ना चाहिए. So the maximum speed is required. The RPM, rotation per minute of all the tires has to be equal. तभी वो business आगे बढ़ेगी वो with the desired speed we want in our business. Okay, so this is where we want automation in place. हमारा हर चीज automated होना चाहिए, हर चीज एक साथ घूमना चाहिए, तभी वो कार आगे बढ़ेगी. Even if we are sitting in the driver's seat, we are trying to steer the car to the right direction. गाड़ी आगे तभी बढ़ेगी जब हमारे सारे व्हील्स एक साथ घूमेंगे. So उसके लिए business automation is a process that ensures all these wheels rotate together at maximum speed. बिजनेस ऑटोमेशन ऐसा एक चीज है जो इन सारे टायर्स को, व्हील्स को एक साथ घुमाते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं. सो दैट इज बिजनेस ऑटोमेशन. और बिजनेस ऑटोमेशन इज नॉट जस्ट वन प्रोसेस, इट इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस which helps these processes, all these processes to run together, right? So what exactly is automation? Automation का मतलब है, automation simply means that implementing technology to automate any repetitive task. हमारे business पे जो भी repetitive task होती है उसको automate करना. That is the simple definition of automation. मान लो हमारे business में sales होता है daily, तो sales का जितने process हम daily करते हैं उसको automate कर दो. जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन में जितने चीजें डेली होता है उसको भी मैक्सिमम जितना हम ऑटोमेट कर सकते हैं उतना ऑटोमेट कर दो. तो जहां जहां पे जो भी चीजें ऑटोमेट कर सकते हैं, जो रिपीटेटिव होता है, उसको सबको ऑटोमेट करके एक साथ लेके उस बिजनेस को ऑटोमेट करना, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द बिजनेस ऑटोमेशन, राइट? सो बिजनेस ऑटोमेशन इज ए कलेक्टिव नेम ऑफ the automation of the various different processes in a business, right? So इसका benefits क्या क्या है? What are the benefits of business automation? सबसे पहला benefit यह है कि it is very less human dependent. इसका मतलब अगर आपके स्टाफ नहीं भी है तो भी ये काम चलता रहेगा, आपका बिजनेस चलता रहेगा. सैटरडे संडे आपका बिजनेस चलता रहेगा, कभी छुट्टी होगी बिजनेस चलता रहेगा, होली आई दिवाली आपका बिजनेस चलता रहेगा, एंड कोविड भी आ गया आपका बिजनेस चलता रहेगा. सो द बिजनेस ऑटोमेशन हेल्प्स यू गेट योर बिजनेस लाइव राउंड द क्लॉक विथ लेस ह्यूमन डिपेंडेंसी. कभी कभी क्या होता है कि हमारे स्टाफ के घर पे कुछ झगड़ा हुआ होता है एंड उसका माइंडसेट काफी अच्छा नहीं होता है. सो ही कैनॉट परफॉर्म वेल इन दैट डेज ड्यूटीज और हिज जॉब. सो उसका रिजल्ट कहाँ पे पड़ता है? उसका रिजल्ट हमारे बिजनेस पे पड़ता है. तो जहां पे ह्यूमन है वहां पे इमोशंस है, वहां पे एरर होने का चांसेस बहुत ज्यादा है. तो उसको कम करने से हम हमारा बिजनेस में बहुत स्टेबिलिटी ला सकते हैं हम. ओके, एंड द सेकंड पॉइंट इज राउंड द क्लॉक फंक्शनिंग. एज आई सेड, द ऑटोमेशन प्रोसेसेस टेक्नोलॉजी ड्रिवन होता है मोस्टली. तो उसका फायदा यह है कि ये दिन रात चल सकता है, कभी भी चल सकता है. इसके लिए कुर्सी की जरूरत नहीं होती है, इसके लिए बिजली नहीं चाहिए, उसके लिए मतलब आदमी हो या ना हो, ऑफिस खुला हो या बंद हो, अपना बिजनेस तो आगे बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा. सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ द ऑटोमेशन. इट वर्क्स अराउंड द क्लॉक. एंड द थर्ड थिंग इज कॉस्ट कटिंग. एज वी से वी कैन कट डाउन नंबर ऑफ पीपल, देन इट स्ट्रेट अवे मीन्स दैट वी आर सेविंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन दैट. जब आदमी कम होता है तो सिर्फ उनका सैलरी कम नहीं होती है, सैलरी भी कम होता है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कम होता है, उनके लिए ये हमारा जो लाइबिलिटी द लीगल कंप्लेंसेस है वो कम हो जाता है, एंड उनके लिए जो फैसिलिटीज देना होता है वो कम कर सकते हैं. उस पे जो खर्चा है, फिक्स्ड लाइबिलिटीज हम कम कर सकते हैं, एंड द कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम कर सकते हैं, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हम कम कर सकते हैं. सो बहुत सारे जगह पे वी कैन कट डाउन द कॉस्ट, ओके, व्हेन वी इंप्लीमेंट ऑटोमेशन इन द बिजनेस. एंड द फोर्थ पॉइंट इज हायर एफिशिएंसी. सिंस हमारे बिजनेस का जो भी प्रोसेस होगा, व्हेन वी ऑटोमेट इट, it tends to give us more efficient results than how people work behind it. तो लोग काम करके जो रिजल्ट्स लेके, मतलब
एक आदमी एक दिन में 8 घंटे काम कर सकते हैं मान लो, तो पूरा दिन अगर हमें काम करना है तो 3 आदमी चाहिए होते हैं एक प्रोसेस एक पूरा दिन करना है तो। सो वी हैव दैट इन्वेस्टमेंट, एंड ये हर बंदे का एक फिजिकल लिमिटेशंस होता है, मेंटल लिमिटेशंस होता है, तो उसके हिसाब से उसका एफिशिएंसी मतलब मैटर करता है। अगर कल उसकी पार्टी हुई तो उसका हैंगओवर से वो सुबह सुबह आए तो उस दिन का उसका शायद उसका रिजल्ट, द आउटपुट कैन बी not to the expectations. So, but for automations, again, since it is a system, it doesn't have that kind of limitations, and it can give us the highest possible efficient results, right? And the fifth benefit of the business automation is that it is very much scalable. एक बार हमारे कोई बिजनेस चल गया और वो प्रोसेस ऑटोमेट होके चलना शुरू हुआ, देन वी कैन स्केल टू एनीवेयर। मतलब आप दिल्ली में बैठ के भी आप दिल्ली में बिजनेस कर सकते हो, और वहां से जब आपका बिजनेस वहां पे ऑटोमेट हो गया, देन यू कैन मार्केट आउटसाइड एंड यू कैन स्केल लाइक एनीथिंग। यू कैन even do business and in the entire country. You can go to other countries. It is very easily scalable. So that is the benefit of automation. अगर हम human dependent है तो हमारा scalability factor is very less. But if we are automated, we can scale to any level, to any place. So that is the advantage of business automation. And आजकल क्या होता है, the investors look into these two things, the scalability and the sustainability. अगर ये दोनों है तो वो इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस वहां पे बहुत ज्यादा है। अगर स्केलेबल ही नहीं है आपके बिजनेस तो इन्वेस्टमेंट रेज करने का चांसेस काफी कम हो जाती है। सो एंड द नेक्स्ट इज हम ये प्रोसेस को देखते हैं। मतलब लेट्स गो टू सम फंक्शनल एरियाज वेयर यू कैन इम्प्लीमेंट ऑटोमेशन। मतलब एक बिजनेस में क्या क्या प्रोसेस होते हैं और वहां पे क्या क्या ऑटोमेशन का चांसेस है, मतलब क्या क्या ऑटोमेशन हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज मार्केटिंग ऑटोमेशन। आजकल आप मार्केटिंग ऑटोमेशन के बारे में बहुत सारे सुन रहे होंगे, बिकॉज दिस इज द मोस्ट पॉपुलर ऑटोमेशन विच स्टार्टेड अर्ली, एंड the next automation is the most desired one. So let us discuss first this the marketing automation. Marketing automation का मतलब क्या होता है? The real result of marketing is that identifying the potential leads and qualifying them for the sales. That's the purpose of marketing. तो पहले जैसा नहीं है आजकल। पहले क्या होता, टीवी में एडवर्टाइजमेंट देते हम और न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते। मोस्ट ट्रेडिशनल वेज ऑफ मार्केटिंग that is actually very expensive as well as it is very less. हम उस पे जो आजकल रिजल्ट आता है that is very less, एक्सपेंस तो बहुत ज्यादा है। तीसरा, you cannot monitor the spend of the money. वो अगर आपने एक एड पुश किया टीवी में तो कितने लोग देखें, कहाँ देखें, कौन सी एज का देखें, किस डेमोग्राफी के लोगों ने उस एड को देखा और किससे बिजनेस आया किससे नहीं बिजनेस आया, ये आपको पता नहीं चल सकता है। But in the digital world, it is possible. So that's why most of the new companies and big brands are looking into the digital marketing methods. आजकल का that the most trending marketing method is digital marketing. So coming to digital marketing, we can automate a lot of digital marketing activities. So that is marketing automation. तो मार्केटिंग ऑटोमेशन में आप अपने टारगेट ऑडियंस को पिन पॉइंट कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं के पास आप एड्स पहुंचा सकते हैं, और आपके जो इन्वेस्टमेंट रहेगा ये जो मार्केटिंग कैंपेन्स की, दैट विल बी 100% यूजफुल, एंड यू कैन कनेक्ट टू दोज पीपल, यू कैन कीप नर्चरिंग देम फॉर आपके सेल्स पिच को बिफोर पिचिंग द सेल्स, you can keep nurturing them through lot of ways. You can do giveaway campaigns, you can do automated connections, you can do lead generation campaigns, brand awareness campaigns. इनसे क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट के बारे में आपके टारगेट ऑडियंस के दिमाग में वो ब्रांड बिट जाएगी, और वो उसका मतलब वो जो प्रोडक्ट का जो यूज केस है वो एडिफाई हो जाएगा, और मतलब उनके दिमाग में जब भी वो चीज की जरूरत होती है वो they will start thinking about your brand and they will come to your platform. It can be a website, it can be social media, or it can be any lead generation mediums, and you can take the leads through those channels and you can qualify the leads. मतलब हम एक दिन में मान लो 1000 लीड लेते हैं, so obviously we cannot follow up all these people in one day, but
इफ वी कैन क्वालिफाई द लीड्स, जिनको एक्चुअल जरूरत है उस प्रोडक्ट की, हम उन्हीं को अगर फॉलो अप करके सेल्स पिच करेंगे तो वहां पे सेल्स होने का चांसेस बहुत ज्यादा है. सो वी कैन डू ऑटोमेट दैट प्रोसेस ऑल्सो. आज हमने कोई लीड लिया है, कोई लीड हमें आज मिला है, तो हो सकता है ये 1 साल के बाद कन्वर्ट हो सकता है. इफ यू आर इनटू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, अगर आप प्रोजेक्ट विल्लास बनाते हैं या फ्लैट्स बनाते हैं, and you are an engineer or you are an interior designer and you are doing marketing campaigns, तो आज जो बंदा आपको लीड दिया है, हो सकता है वो अपना फ्यूचर का घर बनाने के बारे में सोचना शुरू किया है. हो सकता है वो 2 साल के बाद ही अपने घर बनाएंगे. तो आज का वो लीड आपका कन्वर्ट होगा 2 साल के बाद. इसका मतलब ये नहीं है कि वो लीड खराब है या आज का क्वालिटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है. वो लीड अच्छा लीड है, वो अपने पास रहना चाहिए. मार्केटिंग ऑटोमेशन प्रोसेस को लेके हमें नर्चर करना होगा. जब भी उसका घर बनना शुरू होगा, उस वक्त सिर्फ आपके ब्रांड ही उसके दिमाग में आना चाहिए और आपके तरफ से काफी सपोर्ट उसको मिलना चाहिए. तो उसका घर का प्लानिंग टाइम में बहुत सारे सपोर्ट इनपुट्स आपकी तरफ से उसको देना चाहिए. तो ऑटोमेटिकली दैट पर्सन विल गेट कन्वर्टेड टू योर बिजनेस. So all these things can be automated by implementing marketing automation. The next is sales automation. This is the most desired automation process right now in the market. मतलब सेल्स तो हर किसी को चाहिए. सेल्स के बिना कोई बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता है. प्रॉफिट चाहिए तो सेल्स चाहिए. मतलब आजकल ऐसा भी है कि अगर आपको सैलरी भी देना होता है तो सेल्स नहीं होगा तो सैलरी भी नहीं दे पाते आजकल के मतलब बहुत सारे स्टार्टअप्स. सो सेल्स हैज टू हैपन. सो डेलीगेटिंग द लीड्स टू अ सेल्स टीम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन सेल्स. हम आजकल क्या देखते हैं, फेसबुक लीड कैंपेन्स हर कोई चलाता होगा और लीड्स तो आते हैं कभी रात को 9 बजे या 10 बजे और हमारा एजेंसी हमें डाउनलोड करके देते हैं वो एक्सेल शीट नेक्स्ट डे. ओके, बाय द टाइम आवर सेल्स टीम कॉन्टैक्ट्स दैट पर्टिकुलर लीड, वो या तो वो भूल गया हमारे बारे में, नहीं तो वो अपने ऑफिस पे होगा, नहीं तो वो अपने उसका रिक्वायरमेंट अगर ज्यादा अर्जेंट है वो अपने आप चला गया हमारे कॉम्पिटिटर के पास. तो हमने जितने एफर्ट लिया है वो लीड लेने में, वो सारे वहीं वेस्ट होने का चांसेस है. तो डेलीगेटिंग द लीड्स टू द सेल्स टीम इंस्टेंटली इज वेरी इंपॉर्टेंट कमिंग टू सेल्स. एंड सेकेंड थिंग इज दैट अगर हम मान लो वी आर सेल्स मैनेजर और वी आर बिजनेस ओनर, तो हमें पता चलना चाहिए कि सेल्स टीम को लीड मिला है और उनका काम क्या है, वो इमीडिएटली फॉलो अप करना, क्लोज करना. वो सैलरी के लिए काम करते हैं, ये सेल्स टीम में जो भी काम करते हैं वो हमें आके बताएगा सर लीड अच्छा नहीं था और वो फोन पिक नहीं किया, वो कुछ भी एक्सक्यूज दे सकता है. लेकिन अगर वो ठीक से काम करेंगे हमें बिजनेस मिल जाएगी, उसको हम इंसेंटिव दे सकते हैं. तो उसके लिए क्या करना होगा, जब भी लीड आ गया तो उसको लीड जल्दी से जल्दी उसके व्हाट्सएप में दे सकता है तो व्हाट्सएप में दे दो. साथ साथ उसका एक टास्क क्रिएट करो सिस्टम में, सो दैट आपका मैनेजर को पता चलेगा कि एक लीड आया भी है और वो सेल्स टीम को असाइन भी किया है. राइट, जब उस बंदे को पता, उस बंदे के दिमाग में रहेगा कि हमारे सिस्टम में ऑलरेडी मेरे लिए एक टास्क बना है, तो वो वहां पे कल्टी नहीं मार सकते, वो एक्सक्यूज नहीं कर सकते, उसको फॉलो अप करना होगा और सिस्टम में अपडेट करना होगा. जब वो चीज वो करेंगे ऑटोमेटिकली आपका लीड्स का कन्वर्शन धीरे धीरे बढ़ जाएगी. आपको पता है ये जो लीड्स अगर हम इंस्टेंटली फॉलो अप करते हैं, देयर इज अ चांस ऑफ कन्वर्शन 30 टाइम्स मोर देन फॉलोइंग अप इन द नेक्स्ट डे. एक दिन के बाद आप फॉलो अप करेंगे तो कन्वर्ट होने के जो चांसेस है उससे 30 टाइम्स ज्यादा है अगर आप इंस्टेंटली फॉलो करेंगे तो. सो दैट इज पार्ट ऑफ सेल्स ऑटोमेशन. एंड द थर्ड थिंग इज दैट अगर आपका प्रोडक्ट का प्राइसिंग फिक्स्ड प्राइसिंग है, फॉर एग्जांपल इफ यू टेक दिस पेन, ये पेन का प्राइस 10 रुपीज है या 20 रुपीज है, ये फिक्स्ड प्राइस है. तो व्हेन यू गेट ए लीड यू कैन सेंड द इंस्टेंट प्रपोजल. इंस्टेंट प्रपोजल बोले तो एक लीड फेसबुक में सबमिट हो गया, ऑटोमेटिकली अपने सिस्टम से एक प्रपोजल उस बंदे का ईमेल पे चला गया, व्हाट्सएप पे हमने हिंदी में नोटिफिकेशन दे दिया. तो इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा यह होता है कि प्रपोजल बना के भेजने का टाइम हम सेव कर सकते हैं. right, and we can also do like whenever that person opens the proposal our sales team will get notified. मतलब मैंने एक proposal automate कर रखा है, मेरा फेसबुक कैंपेन में एक लीड आया, मेरा सिस्टम ने ऑटोमेटिकली एक प्रपोजल पुश किया, वो कस्टमर ने
वो ओपन किया प्रपोजल, तो मैं अपने सेल्स टीम को नोटिफिकेशन दे सकता हूं कि उस कस्टमर ने वो प्रपोजल ओपन किया है, जल्दी से जल्दी उसको फॉलो करो। और ये कस्टमर हो भी सकता है, जैसे हमने बताया कि द पर्सन इज प्लानिंग टू मेक हिज हाउस मे बी आफ्टर 2 years, तो 2 साल के बाद शायद वो बंदा वापस आके हमारा प्रपोजल ओपन कर सकता है। अगर वो 2 साल के बाद में भी वो प्रपोजल ओपन करते हैं, तो हमारा सेल्स टीम को तब भी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, एंड दिस इज ए काइंड ऑफ लाइफ टाइम फॉलोइंग अप विथ दैट वन पर्टिकुलर लीड विच हैज कम इन इवन टुडे। अगर आज आज तक आपने जितने कैंपेन्स किया है, जितने लीड्स लिया है, इफ इट इज मोर देन 1000, बिलीव मी, उसी लीड आप फ्यूचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको नया लीड्स लेने की जरूरत कभी कभी नहीं पड़ता, क्योंकि इफ यू आर इनटू बिजनेस फॉर 15 years और 10 years, अभी तक आपका जो कस्टमर बेस है, जितने लीड्स आपने इस 10 साल में या 5 साल में लिया है, दैट इज इनफ फॉर यू टू सेल इन योर लाइफ टाइम। आपको नया मार्केटिंग कैंपेन्स पे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इफ यू आर प्रॉपरली स्टोरिंग दैट डाटा एंड फॉलोइंग अप। अगर आपके मार्केटिंग ऑटोमेशन एंड सेल्स ऑटोमेशन प्रोसेस वहां पे है, so this is the one of the best advantage of the automation, that you can save lot of money instead of spending lot of money, wasting money in the everyday campaigns. उतना खर्चा नहीं करना पड़ता आपको। So that is the beauty of sales automation. It is very very beautiful and it is very very effective also. अगर आप sales automation implement करते हैं, then you instantly you can see the change in your business. Okay. And the third thing is that it is CRM automation. I mean customer relationship management automation. जैसे आपका एक कोई सेल्स आज हो गया, एक मतलब यू गॉट ए न्यू कस्टमर टुडे, सो वन थिंग यू नीड टू एंश्योर इज दैट इस कस्टमर से फीडबैक लेना जरूरी होता है। उस कस्टमर को बताना भी जरूरी होता है कि उसने जो प्रोडक्ट परचेज किया हमसे वो अच्छा प्रोडक्ट है, मतलब उसका जो डिसीजन था पेमेंट करने की, वो हमसे प्रोडक्ट खरीद के हमें पेमेंट देने की जो वो डिसीजन उसने लिया है लाइफ में, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन ही हैज टेकन। एंड हमें उसको ये भी बताना होगा जो प्रोडक्ट उसने हमसे लिया है उसका फायदा क्या क्या है, वो कैसे यूज करना है, ये यूज करने से उसको क्या बेनिफिट्स मिल सकता है, ये सब हमें उसको बताना है। और जब ये चीज हम उसको बताएंगे, दे फील सो सैटिस्फाइड एंड डिलाइटेड दैट he took right decision to spend that money in your business and to buy the product from you. एक बार वो रिलेशन वहां पे बन गया, तो आगे आप जब ये उसको वो प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, he will come back to you. He will refer his friends to you for the same product. ऊपर से when if you have more products for them, if you want to sell more products to them, then you can easily approach them and they will start functioning like your brand ambassador. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप। तो वहां पे हम क्या क्या कर सकते हैं? वी कैन सेंड ऑटोमेटेड फीडबैक रिक्वेस्ट आफ्टर सेल्स। वी कैन डू अपसेलिंग प्रोसेस, अपसेलिंग नर्चरिंग, मतलब हमारे नेक्स्ट ऑफर के बारे में, मान लो इफ समबडी इज बाइंग अ प्रोडक्ट विच एक्चुअली लास्ट फॉर 30 days, ओके, तो हर 30 days में आपको सेल करना है उस बंदे के पास, तो आप वो सिस्टम में ऑटोमेट कर सकते हैं that this person has purchased this product on the 1st of January. Now follow up the person on 1st of February that whether he has consumed the product and if he is ready for the next purchase. अगर वो ready नहीं है, so there is something wrong because that person is not using your product. अगर वो customer आपको product अगर use नहीं कर रहे हैं, तो आपका लाइफ टाइम उस बंदे के पास सेल करने का अपॉर्चुनिटी लॉस हो रहा है। सो यू नीड टू फॉलो इट अप। एक बार वो फॉलो अप कर गया, वहां पे फॉलो अप करने के बाद उससे पता चल गया कि अगर वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, देन यू कैन गेट रेकरिंग सेल्स फ्रॉम इवन 1%। दैट इज कॉल्ड अपसेलिंग। अपसेलिंग आप लाइफ टाइम में कर सकते हो एक कस्टमर के साथ। यू आर सेफ, योर बिजनेस इज मोर सिक्योर्ड। ओके, सो दैट इज द पावर ऑफ CRM ऑटोमेशन, कस्टमर रिलेशनशिप ऑटोमेशन। द नेक्स्ट इज HR ऑटोमेशन। As I say, automation हर जगह implement करना है, but there are many places where we cannot replace human resources. Okay, so the most important thing is that the people who are joining our team has to be so efficient. Not only efficient, they should have the right attitude, right skill set, और वो अपना values के साथ साथ
मिलना चाहिए, मिलना जुलना चाहिए, मतलब हमारा बिजनेस उसका वैल्यूज को सूट करना चाहिए, उसका वैल्यूज हमारे बिजनेस को सूट करना चाहिए. So to find those people, you can run HR automation process, HR automated recruitment process. And recruitment process में क्या क्या normally होता है? We look at their technical qualifications, certifications and attitude, other skill assessment होता है. तो ये सारे चीज आप ऑटोमेटेड असेसमेंट इंप्लीमेंट कर सकते हैं. उसके साथ साथ इंटरव्यू में एक बंदे को लाके टाइम वेस्ट करने से पहले आप बता सकते हैं कि हमारा कंपनी ये है, हमारे कंपनी में यही होता है और हम आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं. अगर आप ये कर सकते हो, इफ यू फील दैट दिस इज द राइट फिट फॉर यू, इफ यू फील दैट यू कैन डिलीवर व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, देन जस्ट कम इन. एंड उसका असेसमेंट होने के बाद इफ यू फील दैट दिस पर्सन इज एलिजिबल इन द means of his skill set also, then put that person into the interview table. So ये सारे चीजें आप वहां पे ऑटोमेट कर सकते हैं, तो आप बहुत टाइम सेव कर सकते हैं. ऊपर से यू कैन रन द ऑटोमेशन टिल यू फाइंड द राइट कैंडिडेट फॉर योर जॉब. ओके, एक बार वो कैंडिडेट आपके बिजनेस में आ गया, देन यू कैन इम्प्लीमेंट द ट्रेनिंग प्रोसेस, ट्रेनिंग ऑटोमेटेड ट्रेनिंग प्रोसेस. फॉर एग्जाम्पल, आपका अगर कोई IT कंपनी है, वन डेवलपर इज ज्वाइनिंग यू टुडे. सो आपको ये पता है दिस पर्सन हैज जॉइंड एज ए जूनियर डेवलपर. 2 साल के बाद ये सीनियर डेवलपर बनेंगे, 5 साल के बाद ये टीम लीडर बनेंगे और 7 साल के बाद ये शायद प्रोडक्ट मैनेजर भी बन सकता है. ये जब 7 साल में प्रोडक्ट मैनेजर नहीं बनेंगे, इसका मतलब ये है कि दैट पर्सन हैज नॉट इवॉल्व, वो अच्छा रिजल्ट आपकी कंपनी में नहीं दे रहा है, उसका करियर ग्रोथ नहीं हो रहा है, साथ साथ आपका कंपनी का ग्रोथ भी नहीं हो रहा है. सो whenever a new person is joining in your company, you should have a long term plan for them. तो उसके हिसाब से उनको आगे बढ़ने के लिए you have to implant the training process. मतलब आज का उसका स्किल सेट को लेके फ्यूचर में उसको क्या स्किल सेट चाहिए होगा, वहां तक ऑटोमेटेड ट्रेनिंग प्रोसेस इम्प्लांटेड होना चाहिए. उससे फायदा यह है कि वो बंदा काम करता रहेगा, ऑटोमेटिकली पढ़ता रहेगा. वो जब पढ़ता रहेगा, उसका नॉलेज बढ़ती रहेगी, हमारा प्रोडक्ट उतना अच्छा होता रहेगा. Gradually, he will start teaching new people. He will lead the team. He will take that ownership of the product, and he will become a lifetime asset for our company. So you can automate that training process as well. And automated payroll. There are many tools right now in the market. There is a concept called neo banking. आप शायद सुने होंगे. Neo banking is something. It is disrupting the normal banking processes. वो पुराना जमाना था कि हम बैंक में जाके ट्रांजैक्शन करते थे. आजकल इट्स नेफ्ट आ गया, नेट बैंकिंग आ गया, अभी तो नियो बैंकिंग आ गया. नियो बैंकिंग बोले तो यू कैन डू ऑल यूर अकाउंट ओपनिंग से लेके हर चीज आप अपने मोबाइल ऐप में कर सकते हैं, आप PC में कर सकते हैं, आपको बैंक में जाने की कोई जरूरत नहीं है. सो दैट एडवांस्ड इज द टेक्नोलॉजीज. तो अगर हम टेक्नोलॉजीज और मार्केट ट्रेंड्स के साथ हम improve नहीं करेंगे, our business will not grow. So we have to keep the pace up. Okay, so payroll automation is something like हर महीने में payout होना है. That depends on mostly 2 things. One is the performance based, sometimes incentives होता है. Second is the attendance. Attendance अगर absent है तो payment normally करती है. तो ये सारे चीजें हम automate कर सकते हैं. इसका फायदा यह है कि हमें उसपे HR एक्टिविटीज में टाइम ज्यादा स्पेंड करने की जरूरत नहीं. दिस ऑल्सो कैन बी ऑटोमेटेड. द नेक्स्ट इज फाइनेंस ऑटोमेशन. मतलब वेंडर पे आउट्स होते हैं. तो अगर वो फिक्स्ड पे आउट्स है, जैसे इफ यू आर डूइंग डिजिटल मार्केटिंग विद ए कंपनी एंड हर महीने उनको 15,000 आप पे करते हो, तो इट कैन बी ऑटोमेटेड. आपको उसके बारे में सोचना नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली द सिस्टम विल डू द पे आउट्स. एंड पेमेंट कलेक्शन. कभी कभी अगर आप एजेंसी है तो आपको कभी आपने क्लाइंट से पेमेंट लेना होता है. So you can put the payment collection subscription billing process आप डाल सकते हैं. तो उससे क्या होगा, the system will remind you and that client about the payment. तो अगला 10 तारीख को पेमेंट, अगर आप every 10th of the month you take the payment from your client, then the system will remind both of you that this payment is due and get that amount. Okay, so customer को क्या करना होगा, client को क्या करना होगा, वहां पे एक लिंक रहेगी, वहां पे क्लिक करो, जाके पेमेंट करो, खत्म, बस खत्म. और तीसरा ये है कि ऑटोमेटेड सब्सक्रिप्शन बिलिंग. तो वहां पे अपने उसके कार्ड से, अपने क्लाइंट के कार्ड से ऑटोमेटिकली द सिस्टम विल पुल द मनी एंड सेंड टू अस.
अगर उसको कैंसिल करना है, ही विल बी गिवन 2 नोटिफिकेशंस। अगर उस पर नहीं कैंसिल किया तो ऑटोमेटिकली द पेमेंट विल बी टेकन बाय द सिस्टम। सो इससे क्या होगा, आपका जो पेमेंट फॉलो अप प्रोसीजर जो है वो काफी स्मूथ हो जाएगी, और जिन्होंने पेमेंट नहीं किया है उन्हीं को सिर्फ आपको फॉलो अप करना होगा। आजकल हम क्या करते हैं, हम हर क्लाइंट को फॉलो अप करते हैं, सर आपका पेमेंट ड्यू अगला दिन आपका पेमेंट ड्यू है, आने वाला संडे मंडे आपका पेमेंट ड्यू है, बट वो कभी टाइम पे वो पेमेंट नहीं करते हैं। बट इफ द प्रोसेस इज ऑटोमेटेड, देन आपको सिर्फ उन्हीं को फॉलो अप करना है जिन्होंने टाइम पे पेमेंट नहीं किया है। ओके, सो दैट इज पॉसिबल विद फिनेंस ऑटोमेशन। देन कम्स कंप्लायंस ऑटोमेशन। हम सब जीएसटी फाइलिंग करते हैं एंड वी डू लॉट ऑफ, आपको पता है ये आरओसी फाइलिंग होता है, एनुअल कंप्लायंस होता है, जीएसटी फाइलिंग होता है, तो ये नॉर्मली कंपनी सेक्रेटरी या सीए करते हैं। तो वो सारे प्रोसेस हम ऑटोमेट कर सकते हैं, सो दैट all of us are in a loop that these processes has to be automated, like compliance has to be filed. So this will give you strong foundation for your company that you are adhering with the all compliance legalities. So likewise, there are a lot of automations, like since it is business automation is like process, mostly the business process are getting automated. So आपके business में जितने process है, if you can think about it, if you can make clear documentation of that, I think most of the processes can be automated. So proposal automation is something which I have told you, and the franchising automation is a process where आपको पता franchising क्या होता है? Franchising में you can scale to different cities, different places, to different geographical locations through franchising. It helps you get more turnover for your brand, to get more sales. So to find the right franchisee, what happens is that हम बहुत सारे marketing campaigns करते हैं, और what I've seen is that the franchising automation में जितना franchisee को target करके जो deal close करने में जो खर्चा होता है, that is very huge usually. So if you implement franchising automation, you can get a lot of leads. First of all, you can automatically qualify them. You can send the automated agreements, and you can do the payment follow-ups. It is not that 100% automation, but a lot of the activities in that process can be automated. And the third one is a referral automation. The referral automation is a process of taking referrals from your existing clients. Okay. That works like, मान लो मेरा एक client है, तो मेरा customer है, so he is happy with my product. So what I will do is that I will put a referral automation in place, and my system will send a message to the customer that since you are happy with our product and service, we request you to give 2 referrals. अगर आप 2 referrals देंगे, we will give you some discount or some offer, or some gift. अगर वो convert भी हुए, वो referrals convert business हो गया, तो we will give you some more discount. तो इसका फायदा ये है कि you will get more people, more customers without spending money in marketing. Okay, आपको तभी पे करना है जब वो business deal close होंगे. So that is referral automation. And there is one more thing, subscriber growth automation. Subscriber growth automation, I'm not referring to the YouTube channel or YouTube followers or Facebook followers. वो सब बोट्स हो सकता है। द रियल क्वालिटी सब्सक्राइबर्स अगर आपको मिल जाती है, तो दोज पीपल आर गोइंग टू स्टे विथ यू, दोज पीपल आर गोइंग टू डू बिजनेस विथ यू, राइट? सो टू फाइंड दोज राइट targeted audience, connecting with them, engaging with them, making them as our follower, these kind of things can be automated. That is subscriber growth automation. So इतने सारे automations हम अपने business में ला सकते हैं। इसका फायदा यह है कि बहुत सारी चीजें जहां पे हमारा बहुत एफर्ट, मैन पावर, एफर्ट, मनी वेस्ट होता है, वो सब हम सेव कर सकते हैं। सो हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस ऑटोमेशन प्रोसेस इन योर बिजनेस? द फर्स्ट थिंग इज दैट यू डोंट हैव टू थिंक दिस इज लाइक सम रॉकेट साइंस एंड ऑल। ये इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है आपके लिए, ये उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड है जो ये आपको इम्प्लीमेंट करके दे रहे हैं। It means if I am implementing automation for you, this process implementing the automation is very complicated for me, but आपके लिए वो complicated नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ आपके business process के बारे में समझना है, और आपको कैसे वो ये automation के बाद क्या result आपको चाहिए, उसके बारे में आइडिया होना जरूरी है। बस इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है वहां पे। उसके हिसाब से आपके सिस्टम बन जाएगी ऑटोमेशन,
process बन जाएगी and that can be implemented in your system. So that is how we usually implement automation process. So अगर आपको वो उसके बारे में सोचना है, मतलब how to automate what in your business, then you need to understand the framework. The framework is very simple. We have a session coming up about the automation framework. Okay, आने वाला हफ्ते में शायद हो सकता है. ये framework क्या है, framework में कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं क्या ऑटोमेट हो सकता है, क्या ऑटोमेट नहीं हो सकता है. ओके, तो वो फ्रेमवर्क के हिसाब से समझना है कि आपका इस प्रोसेस ऑटोमेट हो सकता है, ये होने से आपको ये फायदा हो सकता है, इतना आप मनी सेव हो सकता है, इन्वेस्टमेंट सेव हो सकता है, इतना रिजल्ट बढ़ा सकते हैं. एंड आफ्टर दैट फाइंडिंग द राइट टूल्स फॉर देम. एंड शुरू में आई हैव मेंशन दैट वी आर इंटीग्रेटर्स मोस्टली, वी आर नॉट इनटू डेवलपमेंट, हार्डकोर डेवलपमेंट. सो इस दुनिया में इतने सारे ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स है कि अगर आप वही इंप्लीमेंट करेंगे तो आपके बिजनेस में बहुत सारे एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं. तो वी फाइंड दोज राइट टूल्स फॉर यू एंड वी इंप्लीमेंट दैट फॉर यू. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट we already have one platform from our side. So kabhi kabhi that is enough for 90% of our clients. Our platform is enough, but for some people, for some specific requirement, we look for some other tools as well and simply automate. Okay, so अपना requirement समझ गया, process समझ गया, right tools को पता कर लिया और वो implement कर गया, आपका business automate हो गया. And what people usually think is that automation is little complicated and it is very expensive. It is not expensive. अगर आप दो बंदे को सैलरी हर महीने रिपीटेडली देते हैं तो that is far costlier than implementing automation. Okay, so that is the difference of automation. आपके पास अगर 100 employees है, automation will help you cut down maybe 30% of the manpower in your company. आप आराम से उतना कॉस्ट सेव कर सकते हो, राइट. सो बेनिफिट्स फॉर डिजिटल एजेंसी. अगर आप में से कोई डिजिटल एजेंसी है तो आपके लिए ये फायदा है कि आपके जो क्लाइंट्स है, जो लोग बिजनेस करते हैं, उनको अच्छे से सपोर्ट दे सकते हैं. You can find more customers for you. You can retain them. You can deliver more result to them. Okay. If you're a digital agency, please look into the business automation process because हमारे देश में entrepreneurs, especially the SME segment businesses जो हैं, उनको इसकी जरूरत है. They are looking for it. So study about business automation, implement it for them, and help them to grow because otherwise बाहर की कंपनीज हमारे देश में आके हमारे कस्टमर्स को ले जा रहे हैं. आपको पता ही है, चाइना से बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में आ रहे हैं थ्रू Amazon और Flipkart. You take any platform. So we are ultimately losing our customers from the country. Our customers are paying to the international, the other countries, and हमारा देश का जो asset है, especially the हमारा hard sweat money is going to some other people. So if you are a digital agency, try to help the business people in your circle so that they can earn more money within the country and from the other countries as well. So what will happen if you don't automate? अगर आपके business के processes अगर आप automate नहीं करेंगे तो क्या होगा? The first thing is that you will get outcompeted. You know this. You already know this. I don't have to tell you this because Amazon has taken away lot of local businesses customers. So if you don't automate your business, if you don't do the customer relationship management in an automated manner, ये आपके जो existing customers है, जो existing market है, वो आपको अपने हाथ से निकल जाएगा. The next is you will spend a lot of money. ऑटोमेशन नहीं करेंगे तो आप ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज पे बहुत सारे स्पेंडिंग आप करेंगे, प्लस मार्केटिंग पे आप ज्यादा स्पेंडिंग करेंगे जिसकी जरूरत एक्चुअली नहीं होता है. और अगर आप अच्छे से वो CRM ऑटोमेशन आपका ऑलरेडी इन प्लेस है तो आपको मार्केटिंग पे ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा. अगर आपका सेल्स ऑटोमेशन इन प्लेस है तो आपको मार्केटिंग एक्सपेंसेस का राइट रिजल्ट मिल जाएगी. सो यू कैन सेव लॉट ऑफ मनी. And the third thing is that you will waste a lot of time if you don't automate your business. मतलब आपके जो डिसाइड जो टारगेट टर्नओवर अचीव करने में जितना टाइम एक्चुअली लगना चाहिए उससे ज्यादा आप टाइम लेने की बहुत ज्यादा चांसेस है अगर आप ऑटोमेट नहीं करेंगे तो. So these are the things which you need to understand about business automation. So in short, I am just summarizing the session's details, the topic.
only the businesses that automate will survive in future. अगर आप business में है, if you are into business, you need to take that effort to understand what is automation and what is to be automated. अगर आप ये effort आज नहीं डालेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ जो corporate, जो हाई एंड कॉर्पोरेट कंपनीज है, वो ऑटोमेशंस अपना बिजनेस पे इम्प्लीमेंट करके आ रहे हैं. ऑटोमेटिकली दे विल टेक योर कस्टमर्स अवे. आपके आपके जितने कस्टमर्स है वो सारे के सारे निकल जाएंगे आपके हाथ से. तो आपके बहुत बड़ा खतरा आने वाला है. सो इसको समझिए आप. That is why we are trying to give this business automation sessions free for you, because we want the country to grow. We want the people like you, the entrepreneurs in our country, to understand and evolve in your business for the future. So understand this, implement the automation in your business, grow. You need to reach to more people. You need to hold your existing customers. You need to get the relation maintenance in an automated manner. You have to cut down a lot of cost. You need to scale up a lot of scale up has to be taken at this point of time, because this is the time for your business to take that digital transformation, especially through business automation. मैं इस सेशन को यहाँ पे I'm winding up the session right here, and we can have questions after this. So yeah, before I go, let me tell you what I do. I have a platform. My company name is Business Studio. My platform is Business Studio. You can go to businessstudio.org. That is the website name. I will send the link of my platform in the chat. You can go through my platform. So Business Studio is an all-in-one platform for business automation. We are trying to bring in the tools and features and automation workflows inside the platform for the business owners. That's what we do. Detail में क्या है Business Studio? We will have another session for Business Studio, walkthrough session. And coming to the technical part of like how to implement sales automation, marketing automation, and all those sessions, I will take you through the Business Studio platform. So otherwise, this is what we do. We help business owners to automate their business. And thank you everyone for your time, and let us get into the Q&A session. Thank you.